it's an honor as well to invite Presidential Diamond, Mr. Greg McTee from California, USA, morning 5:30 a.m. Good evening, Vikash. How are you? I'm doing absolutely great, Mr. Super fantastic. And I'm so sorry that we are there, we disturbed you, but everybody's so eager to hear you. Morning five. I've told them as well. Yeah, well, first of all, thank you for such a great introduction. I hope I can live up to all that. But and I also just want to take a moment and thank everybody for investing their time to come here on a Sunday night. This is a coveted time with family, and so for those here on the call to come and spend a few minutes with us to see, how we can bolt our great products in the wellness industry onto an actual platform, a business platform that will allow everyone to grow. I just want to thank everybody for taking the time. I will just answer it in a brief, Greg. So okay, great. I'll do the translation. So Greg sir खाली एक चीज बताना चाहते हैं कि आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया संडे में नॉर्मली एक परिवार का आपको समय होता है, लेकिन आज आपने इस समय शाम के 7 बजे आप इस कॉल में बैठे हैं और आपने वो एक पहला कदम जो कहते हैं हम जो एक सक्सेस का कदम आपने उठाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. Great. Now I've got some slides and Prakash, you're going to go ahead and translate, right? Oh yes, I will do the translation. Okay, fantastic. Well, let me get over to here real quick and share the sound. Just hitting a few things. Great. So what I want to do is let's see here. What we want to talk about, and Prakash, just real quickly, can you hear me okay? Just want to make sure. Okay, fantastic. Well, guys, we hear about so many, business opportunities out there, and the challenge with most of them is they are loaded with quite a bit of risk, or they are not, a highly honorable business. In other words, it's got so much risk. All they talk about is money or things like that. So what I want to talk about is a 10x income growth, but really how as a business owner we can manage our business and put that with the actual products also. So the 10x income growth is really about the growth of our products. The products are the key to the business, but what's different about Unicity? Why Unicity? So that's what we're going to talk about briefly. And we're going to talk a little bit more on the business mindset than the products. आज का जो हम सेशन है, जैसे अभी इन्होंने जैसे बताया 10x इनकम ग्रोथ के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं मार्केट में, बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी में मिलते हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारा हिडन रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे पैसे के बारे में इन्वॉल्वमेंट होते हैं. लेकिन आज ये एक कुछ ऐसी चीज जो डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जो प्रोडक्ट के माध्यम से आपको बिजनेस की और एक बड़ा पिक्चर आपको ये दिखाना चाहते हैं. और मिलियनेयर माइंडसेट एक बहुत बड़ा माइंडसेट जो आपकी जो सोच है करोड़पति की एक सोच की तरह, वो आपको आप उस डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं. Great. So let's talk real quickly. We're talking about a mindset of business here. We have a global convergence going on. Number one, a health pandemic. तो अभी क्या चल रहा है, अभी आपको पता चल रहा है कि अभी ग्लोबली इतने सारे अभी हेल्थ पेंडेमिक चल रहे हैं, जो सबसे बड़ा अभी हमारे लिए चैलेंज है. The second challenge that we're having globally is we have an income pandemic. We have more people that are out of work around the world globally than any time before because of the pandemic. दूसरा जो बहुत बड़ा एक चैलेंज जो अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं ग्लोबली इज ये फाइनेंशियल चैलेंज है, जो ये पेंडेमिक की बदौलत से लोगों के पास आज बहुत सारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनको तकलीफें हो रही है. Now, what I want to do here, Bakash, is touch on a couple things before I get into the history of Unicity. Sure. तो ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा यूनिसिटी के बारे में थोड़ा अपनी हिस्ट्री में घुसने से पहले कुछ आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ. What's important for all of us to know is in our business, it doesn't matter our education, how much money we have, how successful or unsuccessful we've been. What's unique about our business is you've just got to have a large desire to want to grow your business.
हमारे इस बिजनेस में जैसे हम लोग कहते हैं प्री रिक्वेजिट कि आपको ये सारी चीज होने की जरूरत नहीं, आपको इनकम लेवल आपको आपको देखने की जरूरत नहीं, आपकी एजुकेशन कितनी है वो आपको देखने की जरूरत नहीं। बस एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी जो सोच, आपकी जो डिजायर है, जो आपके जो सपने हैं, वही सबसे बड़ा एक प्री रिक्वेजिट है हमारे इस बिजनेस में। So once we have the desire, here are some mindsets. In other words, what do the wealthy people do? There are so many successful people in India. What is the millionaire mindset? The first principle is leveraged principles. So successful people look for businesses that have leverage in them, people leverage, product leverage, etc. तो आज ये मैं आपके साथ थोड़ा कुछ आपको ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पे हमारे जो बिजनेस में हम आज आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि बड़े लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं वो कैसे बिजनेस में सक्सेस हुए हैं। वो ऐसे बिजनेस सक्सेस हुए जहाँ पे लेवरेज इनकम मिलता है, लोगों के ऊपर लेवरेज करते हैं उन लोग, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर लेवरेज करके वो अपने जो ग्रोथ है वो और जो इनकम लेवल जो उन्होंने पाए हैं वो उस बिजनेस के माध्यम से ही उन्होंने उतना बड़ा मकाम हासिल किया है। So the millionaire mindset, they also look for residual income. Residual income is where we will work really hard for 1, 2, 3 years, and then we may be paid the next 30 years. It keeps continuing on. Whereas on a regular job, if we show up and we make a little bit of money, but when we go home, we're not making money. So residual income is also sought out by the millionaire mindset, people that want to start their own businesses. तो ये कह रहे हैं अपने मिलियनियर माइंडसेट की जो करोड़पति जो माइंडसेट है, अगर आपको अगर वैसे माइंडसेट अगर बनानी है तो ये लोग और एक चीज सोचते हैं कि हम ओवरऑल हम अगर फायदा कैसे उठाएं, और वो तभी हो सकता है जब आप इनकम को लेके आप सीरियस रहेंगे और ग्रोथ को लेके आप सीरियस रहेंगे। Wealthy people also look for a monetary bridge. So, in other words, something maybe they can start part time and then go into it full time. So in other words, wealthy people might have one or two different incomes. So that monetary bridge of both making money and eventually growing their knowledge on the business is very, very important to them. जैसे इन्होंने कहा कि वेल्दी इनकम जो बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो जैसे नंबर 2 पॉइंट में इन्होंने कहा, जो पहले सबसे पहले अब मैं बताता हूँ ये पार्ट टाइम इनकम में ये कैसे ये एक नहीं दो तीन इनकम के जरिया कैसे बनाएं, हम अपने इनकम को दो तीन जरिया के माध्यम से हम इनकम कैसे बड़ा करें। और इन्होंने जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कहा रेसिडुअल इनकम, कि हम 2 4 4 5 साल जैसे हम भारत में कहते हैं 2 4 4 5 साल आप काम करके अगले 20 25 साल तक आप उस रेसिडुअल इनकम को आप एंजॉय करें। वो भी ये मिलियनियर माइंडसेट के जो लोग हैं उनको ये सब चीज चाहिए। And one of the last things a millionaire mindset or the wealthy look for is the market share. What market are they going into? And the market that we're currently in is in the wellness industry. It's the second fastest growing industry globally right now. And we're going to talk about the company and how we can make that happen for you. तो ये जो चौथा जो इन लोग जो मिलियनियर माइंडसेट वाले लोग हैं, जो बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, जो अब ये देखते हैं कि मैं कौन से मतलब जो मार्केट को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कौन से मार्केट में मैं जा रहा हूँ। और ये जो मार्केट जो हमारा है वो है वेलनेस मार्केट, जो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है आज। And so let's talk real quickly about Unicity's heritage. This was very important to me, Bakash, as I started to look at all of these things that the wealthy people did. I saw that Unicity had many of these factors, but one of the most important factors for me was the heritage, the foundation of Unicity, and being over 100 years old, going back to the old Rexall drugstores. This was an area that was very important to me and my family. तो जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने भी ये सारे 4 5 पॉइंट्स देखे कि ये सारे पॉइंट्स में कौन से कंपनी आपको ज्यादातर फिट आते हैं। तो जब इन्होंने अपना रिसर्च किया, इन्होंने एक कंपनी पाया उस जमाने में जब इन्होंने आपको यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था। यूनिवर्सिटी एक कंपनी है जो ये सारे बॉक्स में टिक में इसको कहते हैं, मतलब ये जो टिक मार्क में आपको करेक्ट आती है कि यूनिवर्सिटी फिट होता है हमारे लिए, क्योंकि इसका जो इतिहास है जो करीबन 100 साल पुराना इतिहास है। रेक्साल ड्रग्स के वहां से आपको जो 103 मतलब 1903 से जो स्टार्ट हुआ है 100 इयर्स प्लस का जो आपको इतिहास है, ये चीज इनको बहुत स्ट्रॉन्ग पुश किया इनको कि भैया यूनिवर्सिटी इज एक बिजनेस ऐसा है जो हमें आगे करना चाहिए। The other thing that stood out for me, Bakash, was
Unicity is really science-based. They're not marketing-based. So the fact that many of their products may be clinically proven and or in the physician desk reference book, which is the red book in the middle, this is used by doctors around the world. This brought great credibility and comfort to me as a business person. So with the foundation of over 100 years and then noting that they were science-based, these were two of the biggest factors that set them apart from all the other companies out there. तो इन्होंने जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया, और एक चीज जो 100 साल पुराना इतिहास जो यूनिवर्सिटी का, प्लस अगर आपने आज अभी ये जो फोटो दिखा रहे हैं, साइंस बेस्ड, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी साइंस बेस्ड कंपनी है। इसके प्रोडक्ट बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट हैं, और पीडीआर जो फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, जो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा हथियार कहते हैं हम उसको, साइंस बेस्ड पीडीआर लिस्टेड प्रोडक्ट है हमारे, जो डॉक्टर्स बेहिचक उसको आपको लिख सकते हैं। उस तरह के प्रोडक्ट इनको एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, यूनिसिटी इज द बेस्ट एंड द ओनली कंपनी जो उस समय में ये शुरू कर सकते थे। The other thing more on the psychological level is, what are the three pillars that people in India or people in America, what do we look for? And I found that what I loved about Unicity was they're lifestyle based. So they were focused around health, wealth, and time, where a lot of our competitors, all they talk about is money, money, money. We're all about product, product, product. But if you focus on the product and wellness, the income can really grow depending on each person. So the health, wealth, and time, this lifestyle-based focus by Unicity, this was a big one for me. तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इनको क्यों प्रभावित किया आपको यूनिसिटी ने, इस जब इन्होंने देखा यूनिसिटी एक ऐसी कंपनी थी जो प्रोडक्ट को लेके बहुत स्ट्रांग थी, और जब इनको ये लगा कि यार प्रोडक्ट के माध्यम से और आपको ओवरऑल जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फाउंडेशन प्रोडक्ट ही है, जबकि बाकी सारे बहुत सारे हमारे इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जो खाली मार्केटिंग और पैसे के बारे में बात करते हैं, लेकिन यूनिसिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करती है, बिकॉज प्रोडक्ट ही हमारा फाउंडेशन है और प्रोडक्ट के माध्यम से हम इनकम की ओर जाते हैं। And this was a lifestyle index. This was something that I saw years ago, Bakash. And what I realized was my health could improve, my wealth or income, that could have improved. And then also time freedom. So many of us, all we do is work, work, work. We don't have any time. So this lifestyle index, this is an area, these three areas, all of them could experience growth with the Unicity business. This was very important to me. तो उस जमाने में या फिर अभी भी यूनिसिटी को इनफैक्ट हम लोग भारत में हम कुछ और नाम से बुलाते हैं, जैसे ग्रेगसन कंपनी, लेकिन यहाँ पे ग्रेग सर ने क्या बताया कि यूनिसिटी इज अ लाइफस्टाइल कंपनी, क्योंकि इस लाइफस्टाइल कंपनी में आपको जो चाहिए मिलता है, हेल्थ, वेल्थ एंड टाइम फ्रीडम। सो यूनिसिटी क्या है? इट्स अ लाइफस्टाइल कंपनी। और इसमें इन्होंने जैसे कैन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंड ऑफ गो बैक टू द अर्लियर स्लाइड इफ इट्स ओके विद यू? Sure can. तो इन्होंने उस जमाने में ये लाइफस्टाइल इंडेक्स देखा और इनको ये लगा कि हेल्थ फ्रीडम जो है और वेल्थ फ्रीडम है और ये जो टाइम फ्रीडम जो है, जो तीन फैक्टर जो हमें सख्त जरूरत है, ये एक कंपनी है, वो है यूनिसिटी। उस माध्यम से जब इन्होंने वो 20-25 साल पहले स्टार्ट की, ये तीनों जो लाइफस्टाइल इंडेक्स है उसको हासिल ये कर सकते हैं यूनिसिटी के माध्यम से। Great. This other slide, many of you know Robert Kiyosaki. He's a famous author who wrote Rich Dad, Poor Dad. What I loved about, Unicity was we have the ability to really become our own business owner, allowing us to have the independence and the freedom, both in time and money. So, this shows different business segments, but the fact that we could start a business very part-time or even full-time and really control our own cash flow, this was very important to me as a business owner. And because I could do all this while I maintain my current job. So in other words, instead of, I can still pay my bills, but I can start a business that could actually earn more income than my previous job. This was very, very interesting to me. तो ये अभी जैसे भी आप देख रहे हैं, आपको कियोसाकी, ये बहुत बड़े ऑथर है, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, ये क्वाड्रेंट के बारे में भी ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इन्होंने एक चीज जब पहले देखी, एक चीज इनको ये लगा कि यार हम यूनिसिटी के माध्यम से हम पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको, या फिर फुल टाइम कर सकते हैं, या फिर इसके माध्यम से हम हमारे करंट बिजनेस को चलते भी रहें
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जो आज कर रहे हैं, जो इनकम हम अपने जो डे टू डे, मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, कल हम यहाँ से यूनिसिटी में उतना इनकम और या फिर यूनिसिटी में उससे भी बड़ा इनकम हम लेके आ सकते हैं। The other thing that was really intriguing to me, Bakash, was the fact that the wellness business we have is online. You can see all of the benefits listed here. I'm not going to go through all of them because we're kind of short on time, but the ability to start a business with very low income. And, you know, for example, during the pandemic here, my income in the last year did not change simply because one of the benefits we have is being online and having the ability to have the products go directly to the customer. This creates that residual income, that leverage that we hear so much about on the news. तो ये एक So बहुत बड़ा, या आई एम सो सॉरी। so being online is a big deal now. एब्सोल्युटली। और मतलब इनको एक सबसे बड़ा एक फायदा इनको ये लगा कि ये बिजनेस हम ऑनलाइन भी जा सकते हैं। इन्होंने जैसे ये 5-6 पॉइंट्स रखे हैं, ये मतलब जैसे मैं ही पढ़ के था तो लो स्टार्टअप, मतलब आपको शुरू करने के लिए बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन आप कुछ ना कुछ करके आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन स्केल अप कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको काम कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप 60 देशों में बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, ऑटोमेटेड बिजनेस है, 24 घंटे आप काम कर सकते हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बिजनेस पेंडेमिक में, जैसे अगर ग्रेग सर ने बताया, पेंडेमिक में इनका इनकम, जब पूरे लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, इनका इनकम के ऊपर कभी असर नहीं हुआ, बिकॉज ये बिजनेस ऑनलाइन मोड में चले गया था, जूम के माध्यम से वही रफ्तार से बिजनेस बढ़े जा रहा था। The other thing that impressed me the most was being in the healthcare or wellness area. It's the second fastest growing industry globally, only behind IT and technology. So being in a industry that's growing very rapidly can add value and income to us that maybe we've never earned before. तो आपको ये जैसे आपको जो पहले इन्होंने बताया था कि ये एक सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग आपको जो सेगमेंट था, जो आईटी और मतलब एलाइड सेक्टर से हटके था, वो पहला नंबर में था, और हेल्थ केयर वो आपको दूसरे नंबर में था। तो उनको ये लगा कि यार ये एक ऐसा सेक्टर है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, और हम इस सेक्टर में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और ये एवर ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो कभी डाउन होने वाला नहीं है। Fantastic. The other thing that was very important was, at least to my family, the fact that Unicity was international. This was very important because we're in a global business. So you could be living in India, but because we're open in 50 other countries around the world, not only can you make money in India, but you might have relatives, friends, and colleagues in different parts of the world that want to enjoy our products. So the ability to have a global income. And by the way, I think we're in well over 50 countries now. Because we opened several international countries during the pandemic. So having a global income instead of a local income is very, very important to the business owners. तो ये कह रहे हैं कि अपने एक बिजनेस ओनर को जो बड़ा सोच रखता है, बड़ा ग्रोथ माइंडसेट, मिलियनेयर माइंडसेट रखता है, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि मैं अगर एक जगह में बैठ के, जैसे इन्होंने लिखा है कि 50, अभी जो इन्होंने लिखा कि 49 कंट्रीज, लेकिन पेंडेमिक में हमने बहुत सारे कंट्रीज खोले हैं, तो जो करीबन 50-60 कंट्रीज हैं आज हम, उस 50-60 कंट्री में आप यहाँ से बैठ के, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त कहीं भी हो सकते हैं, आप वहाँ पे बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि आज अगर वहाँ पे जाके बिजनेस आपको एस्टेब्लिश करना पड़े, which is practically very difficult, खर्चा आपको पूछे जो वहां पे आना जाना, टाइम, सब कुछ मिला के बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे फिजिकली बैठ के आप वहां पे बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और वहां का इनकम आप यहाँ ले सकते हैं। Now, here a little bit about, self-talk, the mindset. The biggest challenge anybody's going to have in India is the same challenge I had, and the challenge was me. So I knew that in order for my income to grow, I had to grow. And I also realized that I need to be focusing and working with people that have already been very successful. So many times we take advice from people that we respect and like, but they're not successful and they've never built the business. So the mindset or the self-talk that we have as individuals, we can talk ourselves out of things. So I just want everyone to know that that's normal, that we have this talk. And what the most important thing is action moving forward. तो जैसे इन्होंने Sorry about that.
trying to kind of get you to it, you know. but Yeah. तो ये कह रहे हैं कि बहुत बार हम लोग आपस में बात करते हैं, अपने साथ ही बात करते हैं, अकेले में बैठ के अपने साथ हम गुनगुनाते रहे कुछ, तो ये कहते हैं कि हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़ा रोड़ा, you know, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम और हम खुद ही हैं। तो ये प्रॉब्लम खाली भारत में आज हमारे साथ जुड़े हैं, या फिर हमारे बहुत सारे जो लीडर्स आज जो फील्ड में हमारे साथ यहाँ पे जुड़े नहीं हैं, और इन्होंने जब ये बिजनेस शुरू किया तब सारे प्रॉब्लम सेम ही था, और ये प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, हम खुद ही हैं। क्योंकि हम खुद ही हम डिसाइड करते कि भैया हम आगे में जाएं ना जाएं, हमारी सोच, हमारे सपने, हम खुद ही हम उसको डिसाइड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोग आपको ये मिलेंगे कि जो लोग आपको बहुत सारे अच्छे टिप्स देंगे, आपको लेक्चर देंगे, आपको भाषण करेंगे, लेकिन आपको सीखना उसी से है जिन्होंने सक्सेस पाया है इस बिजनेस में, जिन्होंने आपसे कुछ सीख सकते हैं और जहां से आप कुछ आप कुछ लर्न कर सकते हैं। तो वही लोगों तक आपको पहुंचना है, क्योंकि आपको सिखाने वाले तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। Yeah, and what's interesting, Bakash, is people, they'll come off this call and they're curious and they want to know, what's my next step? Your next step is to actually take action. Have a little faith. We have a tendency when we fear things that we move away from them. And what successful, wealthy people do in India that you read about in the paper and the TV and Bollywood, they move towards their fear. Why? Because once you take action towards something that you're interested in, even though you're fearful of it, the reality is the fear diminishes and we start to grow. So our next step for everybody that's listening is to really get together with the person that invited you onto this call and really move forward with great velocity in the business, knowing what we already know. So Greg ji keh rahe hain that's a long one. Oh yeah, every time I'm trying to kind of do it. I'm trying to, yeah, we're growing, aren't we, Bakash? Together. Absolutely, and I'm trying to justify it, to the best possible. You're doing a great job. So तो अभी ग्रेग सर कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी अगर जैसी कॉल खत्म होता है, बहुत सारे लोग एक्साइटेड में, बहुत इंटरेस्टेड होके अपने अपलाइन या फिर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है तो उनको फोन करके अब क्या करना है मुझे, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे मैंने सुना, मैंने जाना, मैंने देखा, अब क्या करना है। तो ग्रेग सर कह रहे हैं कि अभी आई थिंक अभी सबसे पहले चीज आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ओके मेरे को आगे बढ़ना है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कि क्या होगा, हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। तो ये एक जो डर का जो माहौल है, जो एक फियर है, हमें एक्शन कर लेके हमें उस फियर की ओर जाना है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने डर को से भागते नहीं है, ये डर की ओर जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हिंदी में डर के आगे जीत है। तो वही डर के आगे जीत है, हमें डर से भागना नहीं है, हमें इस डर को लेके भागना है और डर से जीत पाना है। So Bakash, I just want to be a little personal with everyone. As most of my team knows, I grew up very, very poor. I actually grew up in an orphanage or foster home. So much of the hardship that individuals have around the world, including in India, I want you to know I've been there. And this was actually my very first home, which in America, this home's really small and it's kind of crooked. But I want them to know that the dreams are possible, because this is before Unicity and this is after Unicity. And the only difference between those was action. The only reason I have the lifestyle I do today is because I took action. Yes, I was a little fearful. Yes, I had doubts about myself, but I worked more on myself than the business, and that allowed me to grow and have a home where I could raise my family and change my future for my kids compared to how I lived. I know that's a lot to translate, but as usual, so could I request you to kind of go back on this slide? Yeah, we'll go back to the first home here. Yeah. So तो अभी ग्रेग सर कह रहे हैं मैं आपके साथ कुछ पर्सनल कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो चीज हैं जो उनके जो टीम मेंबर ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, इनका जो बचपन रहा वो थोड़ा अच्छा नहीं था। ये अनाथालय में थे, फॉस्टर होम में थे ये, और वहां से इनकी जिंदगी शुरू हुई। तो ये कहते हैं कि लोगों की जिंदगी में जैसे मुश्किलें आए, इनकी जिंदगी में आपको मुश्किलें आए, लेकिन इन्होंने बिफोर और आफ्टर जो दिखाया, अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं, बिफोर जो पहला और अभी का आफ्टर में एक ही चीज अंतर है, वो है एक्शन। वो कहते हैं कि मैंने भी वो मुश्किल भरे सिचुएशंस, आपको जो
जो हम लोग बहुत सारे लोग हम जूझते हैं, हम देखते हैं, हम डे टू डे, और फिर हमें लगता है यार ये फिर मतलब ये क्यों खाली मेरे साथ होता है? नहीं, इनके साथ भी हुआ है, लेकिन ये कहते हैं कि वो उस समय में और इस समय में जो बिफोर और आफ्टर जो आप आज पिक्चर देख रहे हैं, इसमें खाली एक ही अंतर है कि इनका एक्शन। डर तो इनको भी था कि यार मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये डर के आगे, जो मैंने कहा कि डर के आगे जीते, वही चीज इन्होंने की। और आज आज आप इनको आप देख सकते हैं, इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति है ये आज। बस यही चीज है कि हारना नहीं है, मतलब हाँ, मतलब उस सिचुएशन को छोड़ना नहीं है, जाना है आगे और कुछ कर गुजरना है। So Bakash, the last thing I want to talk about is, what's the next step? When people get off this call, this is what they need to remember. Number one, the history, the foundation of Unicity, going back over 100 years, this strong foundation is one of the keys to their success in India. तो अगर मान लीजिए आज आज बहुत सारे लोग जो नए हैं, जो हमारे इस कॉल में जुड़े हैं, एक चीज जो मुझे यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा था, जो मैंने आपको बताया, दोबारा मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ, इस यो यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री है, जो 100 साल से ज्यादा पुराने का हिस्ट्री था। ये हर एक कंपनी के साथ नहीं होता है। The second area that gives Unicity market dominance in India is that we're science-based. These products are manufactured in the United States. In many cases, they've been clinically proven, and they're in the physician desk reference book. This is important to know because our competitors do not have that advantage. Wealthy people understand where the advantages are. So this science-based product in India in the PDR sets us apart from all the competitors. आई थिंक हम अगर हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे कंपटीशन की हम अगर बात करें, हमारा जो पीडीआर फिजिशियन डेस्क रेफरेंस जो प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे जो इस फिजिशियन डेस्क रेफरेंस को लेके हम बहुत उत्साहित होते हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा एक टूल है, ये हमें और हमारे कंपटीशन को, मतलब आपको क्या कहता है, ये आपको सेपरेट करता है। साइंस बेस्ड प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट्स बस ऐसी आपको मतलब ऐसी प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे इन्होंने कहा कि यूएस में बनता है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो फिजिशियन डेस्क रेफरेंस में लिस्टेड है, और साइंस बैक्ड प्रोडक्ट है, रिसर्च प्रोडक्ट है, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, यही हमारा एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कोई भी दूसरे कंपटीशन के साथ बहुत अलग में, मतलब हमें बहुत बड़ा एक ऊपर आपको मौका लेके जाता है। And the last thing is timing, Bakash. The wellness industry, Unicity in India, has not gone through momentum. So timing is everything. Don't worry about your income over the last year, no matter what business you're in, because it's a global pandemic. People are having problems on their income. So the past doesn't equal the future. But as we move out of the pandemic now, this timing of the wellness industry, as it relates to both income and product, this may very well move into one of the fastest business categories globally. More people than ever are worried about their health, and more people than ever are looking for a secondary income. So the timing of both product growth and income in India is going to absolutely explode in the next 3 years. तो ये कह रहे हैं, आई थिंक ये जो हमारा जो इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री को लोग अभी जानते हैं। इसके बारे में लोग पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि यार नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जानना नहीं है, लेकिन आज आप अगर देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इसके बारे में। जो पहला जो सिचुएशन था और अभी में बहुत जमीन आसमान के अंतर है। तो ये कहते हैं कि टाइमिंग, जो हमारी जो एक वेलनेस इंडस्ट्री की जो टाइमिंग है अभी, जस्ट पैंडेमिक जो अभी हम गुजर रहे हैं, बहुत सही टाइमिंग है। क्योंकि अब और आने वाले 3 साल में या 4 साल आप देखोगे, हमारे इस यूनिवर्सिटी को ग्रोथ, जो अभी जैसे इन्होंने कहा कि 10x ग्रोथ जो हम कहते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से, अगला 3 से 4 साल में आप देखोगे तो हम 10 गुना या फिर उससे भी ज्यादा की ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। बिकॉज ये सही टाइमिंग पकड़ रहे हैं अभी, सही टाइमिंग फॉर प्रोडक्ट, सही टाइमिंग फॉर इनकम, ये दोनों के माध्यम से हम आगे 10 गुना ग्रो कर सकते हैं। Well, Bakash, I just again want to thank you and Vishnu and all the executives there at Unicity. I also just want to thank everybody for being on this call. The reality, that the difference between last month or last year and let me give you an example. People say, well, gosh, Greg, you've really grown it.
Well, what they don't realize is, yeah, we already went through momentum in the US, but it hasn't happened in India. So the only difference between all the people in India and myself and all the other successful partners is time. And so that action, moving forward off this call, taking the time to see the entire presentation. If you sense a little bit of excitement, I know it's 5 a.m. here, but a little bit of excitement in my voice, it's because this is where our passion lies as a company and as a distributor, helping people get started. So I just urge you all to take action, have a little faith, be safe, and we'll see you all at the top. थैंक यू ग्रेग. सो अभी ग्रेग सर कह रहे हैं कि अभी अभी ये हमारा जो बिजनेस है ये बहुत सही मोमेंटम में है. आपको खाली क्या करना है, एक ही चीज, आपको एक्शन लेके आना है और यही एक्शन आपको आगे लेके जाएगा. सही समय, सही टाइमिंग, और आपको जिन्होंने अगर बुलाया उसके साथ वापस जाके उनको पकड़ना है और आप बताओ कि अभी क्या करना है. बस एक ही चीज करना है, वो है एक्शन. इन्होंने जैसे बताया कि यार यूएस में कि बहुत सारा जो ग्रोथ हो गया या फिर एशियन मार्केट में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ अभी तक भारत में देखने नहीं मिला है. लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 10x जैसे जो अभी जो इनकी जो सोच है 2021 से 10 गुना हर एक स्टेप में 10 टाइम्स हम लोग ग्रो करेंगे. और यही इनका जो सपना है कि हम भारत में जैसे हम दूसरे मार्केट जैसे एशियन मार्केट, यूएस जिस रफ्तार से भी ग्रो कर रही है, भारत भी अभी 2021 से हम वो 10 गुना ग्रो करेंगे. बस क्या करना है, एक ही चीज आपको और मुझे एक ही चीज करना है. ओनली वन थिंग दैट वी हैव टू डू राइट नाउ फ्रॉम नाउ इज एक्शन. सो ग्रेग, thank you so much for your time. Thank you so much, and I hope our people would have learned a lot of things. Thank you, Greg, for your time. Thank you. Have a great evening. Bye-bye. You too.